Hello students, I am your science teacher. Students, we will start lesson 6 of science, physical and chemical change. Physical and chemical changes. In our daily life, we observe many changes around us. These changes can be observed by us at home, school, playground, parks, and other places. For example, water boils on heating. Iron rusts in moist air. Milk changes into curd. Ripening of fruits, burning of wood or matchstick, change in weather, etc. Among all these changes, बच्चों, हम अपने डेली लाइफ के अंदर हमारे चारों साइड है जो मैनी चेंजेस देखते हैं। ये चेंजेस जो हैं हम अपने घर पर, स्कूल में, प्लेग्राउंड या पार्क में किसी भी जगह पर देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि इन चेंजेस के आइसक्रीम पिघल कर गर्म करते हैं तो पिघल जाती है। वाटर को जब हम बॉइल्स करते हैं तो वे हीटिंग हो जाता है, गर्म हो जाता है। आयरन जो होती है रस्ट हो जाती है, मोस्ट रस्ट एयर के अंदर। ठीक है बेटा, तो कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमारे चेंजेस हम अपने अराउंड अस जो डेली देखते हैं। Some changes can be reversed, whereas some cannot be reversed by तो इनमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बेटा कि जिनके अंदर कोई ऑब्जेक्ट के चेंज आने के बाद दोबारा से रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि अपनी बैक शेप में आ सकते हैं। जबकि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। reversing the conditions. The change which can be reversed by reversing the conditions is known as reversible change. For example, stretching of a rubber band, glowing of an electric bulb, melting of ice, etc. Reversible. तो रिवर्सेबल जो चेंजेस होते हैं उनके जैसे एग्जांपल दिए गए, अगर हम किसी रबड़ को लेकर, प्लास्टिक को लेकर खींचते हैं तो उसको छोड़ने पर अपनी वो पहले वाली शेप में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल है हमारे, जैसे आइस जब मेल्ट होती है तो वाटर बन जाती है। जब वाटर को हम दोबारा से जमाते हैं तो फिर से जो बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। All changes are temporary changes. The change which cannot be reversed even by reversing the conditions is called irreversible change. इसके अपोजिट कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि दोबारा से रिवर्स, एक बार चेंज होने के बाद उस ऑब्जेक्ट में दोबारा से वो चेंज वापस नहीं होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारे इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। For example, aging of living organisms, rusting of iron, burning of paper, cooking of food, growth of plants, burning of fuels, etc. Irreversible changes are permanent changes. In this chapter, we will study the nature of these changes. तो इस चैप्टर के अंदर हम नेचर के अंदर जो चेंज होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करेंगे। Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical changes. Let us start with the physical change. तो हम अगर मेन रूप से देखें बेटा, कॉमन रूप से, तो ये चेंजेस टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकली एंड केमिकल्स। Physical change. We know that properties such as shape, size, color, and state of a substance are called physical properties. A change in which only the physical properties of any substance get changed and no new substance is formed is called a physical change. तो पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल चेंजेस की गुण प्रॉपर्टीज होती है कि इनके अंदर जो एक बार चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वह चेंज जो है, चेंज होने के बाद कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता है। ठीक है, तो यह फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। Some more examples of physical changes. Stretching of a rubber band. Grinding of a substance. Expansion or contraction of substances on heating and cooling. Melting of wax. Formation of clouds. Magnetization of an iron piece. Hammering of metals to form thin sheets, like hammering aluminum metal to form aluminum foil. Stretching metals to form wires,
like hammering copper metal to obtain copper wires. तो यहाँ पर हमने फिजिकल्स चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल चेंजेस की विशेषताएं। Characteristics of physical changes. During a physical change, only physical properties such as size, shape, color, and state change. During a physical change, no new substance is formed. Generally, a physical change is reversible. Generally, no overall energy change takes place. Chemical composition of a substance remains the same during a physical change. तो इसमें हमें बताया गया इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें सिर्फ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि सच साइज, शेप, कलर और स्टेट में ही चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज के अंदर कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता है। और जनरली फिजिकल चेंजेस जो है रिवर्सिबल्स होते हैं, यानी कि इनको दोबारा से एक बार चेंज होने के बाद दोबारा से पहले वाले शेप में ये करना पॉसिबल होता है। इसके अंदर नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस, की जो सारी एनर्जी होती है उस सब्सटेंसेस की वो चेंज नहीं हो पाती है। Chemical changes. A change in which composition and chemical properties of a substance get changed and one or more new substance are formed is called a chemical change. नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, इसके अंदर वन और मोर एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, जबकि A chemical reaction occurs during a chemical change. Change in the physical state of the substances undergoing chemical changes may occur. For example, hydrogen gas burns in oxygen gas to form water liquid. Hydrogen gas plus oxygen gas burns in oxygen. तो जैसा कि आप लोगों ने रीड किया बेटा, केमिकल जो चेंजेस होते हैं उनके अंदर जो कोई न्यू सब्सटेंसेस बनता है, टू सब्सटेंसेस का जब हम कॉम्बिनेशन होता है तो कोई न्यू सब्सटेंसेस बनता है। एग्जांपल के तौर पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है कि एक चीज़ का फॉर्मेशन होता है वाटर का। Gas to form water liquid. Evolution of gas may occur during a chemical reaction. For example, when calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid, carbon dioxide gas is evolved. Calcium carbonate plus hydrochloric acid dilute calcium chloride plus water plus carbon dioxide gas. Change in color and odor of a substance may take place during some chemical changes. When copper carbonate, green color is heated strongly. A black residue of copper oxide is formed. Copper carbonate, green, heat, copper oxide, black, plus carbon dioxide gas. When lead nitrate is heated strongly, a reddish-brown gas having pungent odor is produced. Lead nitrate, on heating, lead oxide plus nitrogen dioxide, reddish-brown gas plus oxygen gas. Formation of a precipitate may occur during a chemical reaction. Precipitate is an insoluble solid substance formed when two chemicals in solution form react. It settles down at the bottom of the container. For example, when aqueous solution of iron chloride is mixed with ammonium hydroxide, a brown precipitate of iron hydroxide is formed. Iron chloride plus ammonium hydroxide reacts iron hydroxide plus ammonium chloride. Change in energy takes place in all the chemical reactions. During a chemical reaction, energy is either absorbed or released. The reactions in which energy is released in the form of heat are called exothermic reactions. For example, when water is added to quicklime, calcium oxide, heat is evolved and solution becomes very hot. Calcium oxide plus water reaction, calcium hydroxide plus heat. The reactions in which energy is absorbed in the form of heat are called endothermic reactions. For example, when nitrogen and oxygen are heated at high temperature, they form nitric oxide. Nitrogen plus oxygen, heat, nitric oxide, gas. Along with heat, sometimes light and sound are also produced. For example, burning of a magnesium ribbon produces a dazzling white light, along with white powder. Types of chemical reactions. Combination reaction. The chemical reaction in which two or more substances combine to form
a single product is known as combination reaction. For example, during burning, carbon combines with oxygen of air to form carbon dioxide. Carbon plus oxygen, burning, carbon dioxide. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि केमिकल्स जो होते हैं वो दो या इससे ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको कंबाइन करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। Decomposition reaction. The chemical reaction in which one substance decomposes, breaks up into two or more simpler substances is known as decomposition reaction. सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है तो जो वन सब्सटेंसेस होता है वो डीकम्पोज होता है टू या उससे ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंसेस में, तो यह डीकम्पोजिशन कहलाता है। For example, baking soda on heating decomposes into sodium carbonate, water vapor and carbon dioxide. Baking soda, heat, sodium carbonate plus water vapor plus carbon dioxide, gas. Displacement reaction. The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is known as displacement reaction. थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वह जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसकी जगह ले लेता है, ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह हटाकर खुद ले लेता है, तो ये कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। For example, when a copper wire is placed in silver nitrate solution, the color of solution changes to blue due to the formation of copper nitrate, and silver gets deposited on copper wire. Double displacement reaction. The chemical reaction in which solutions of two compounds react by exchanging their radicals is known as double displacement reaction. Insoluble product, that is, precipitate, is formed in this reaction. So it is also known as precipitation reaction. For example, aqueous solution of barium chloride, BaCl2, reacts with aqueous solution of sodium sulfate, Na2SO4, to form the precipitate of barium sulfate. Double displacement reaction of BaCl2 and Na2SO4. BaCl2 barium chloride plus sodium sulfate reacts and gives us precipitate barium sulfate plus sodium chloride. Some more examples of chemical changes. Explosion of firecrackers is a chemical change. We know such an explosion produces heat, light, sound and harmful gases. तो इन चेंजेस के अलावा कुछ और एग्जांपल है जो हमारे केमिकल चेंजेस के हैं, जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं फायर क्रैकर जो होते हैं, पटाखे होते हैं, उनका एक्सप्लोजन जो होता है, जब विस्फोट होता है तो इसमें केमिकल चेंज होता है। इनसे क्या प्रोडक्ट होता है, हीट, लाइट, साउंड और गैसेज जो है वो निकलती है, बनती है। That pollute the atmosphere, air pollution. That is why we are advised not to play with firecrackers. Change in color of cut fruits and vegetables on keeping in air is a chemical change. If we cut an apple, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम किसी फ्रूट्स को काट देते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को जब भी, और इसको कुछ समय के लिए रख देते हैं तो एयर के अंदर रखने पर इसके अंदर इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ये केमिकल चेंज है। into slices and keep it in the open for some time. The slice of an apple acquires a brown color due to the formation of new substances by the action of oxygen on the acid present in the apple. Similarly, the cut surface of a brinjal or potato turns black on keeping in air for some time due to a chemical change. Digestion of food is also a chemical change. It involves action of acids and enzymes on food which results in formation of some new simpler substances having different chemical structure and properties. Germination of a seed food, respiration in living organisms, formation of curd from milk, spoilage of food, burning of fuels like wood, coal, kerosene, LPG and petrol, burning of dry leaves, wax candle, incense stick, agarbatti, electrolysis of water to form hydrogen and oxygen, and rusting of iron are some other examples of chemical changes. Characteristics of chemical changes. During a chemical change, one or more new substances are formed. Chemical changes are permanent. Thus, a chemical change cannot be reversed by simple physical methods.
उसके बाद हम केमिकल चेंजेस की विशेषताएं देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होती है कि केमिकल चेंज जो होते हैं इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। सेकेंडली जो केमिकल चेंजेस होते हैं वे सामान्य रूप में परमानेंट होते हैं, उनको हम दोबारा से कैनोट रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। During a chemical change, net change in energy takes place. A large amount of energy is either given out or absorbed in the form of heat or light. For example, burning of fuel produces large amount of heat. During the process of photosynthesis, green parts of the plant absorb solar energy. Plants use this energy to make their food. During a chemical change, both the physical and chemical properties of the substance are changed. इसमें नेक्स्ट है कि केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो उनके ड्यूरेशन एनर्जी जो होती है वो टेक प्लेस, यानी कि चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस, एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर जब हम बर्निंग करते हैं फ्यूल, ईंधन को जब जलाते हैं तो लार्ज अमाउंट के अंदर वहाँ से हीट निकलती है, तो एनर्जी जो है वो चेंज हो गई। नेक्स्ट केमिकल चेंज जो होते हैं उनके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उनके वो दोनों चेंज हो जाती है। Differences between physical and chemical changes. Parameters: new substance, nature of change, reversibility, physical and chemical properties, amount of energy in the form of heat, light, etc. Physical change: no new substance is formed. It is a temporary change. It is easily reversible by simple physical methods. Only the physical properties of the substance get changed. Very little energy is absorbed or given out. Chemical change: one or more new substances are formed. It is a permanent change. It is irreversible. Both the physical and chemical properties of substance are changed. A very large amount of energy is absorbed or given out. Rusting of iron. Iron objects like iron nails, iron pipes, iron grills, iron railings, etc., when kept in moist air for a few days, gets covered with brown powdery substance called rust. This process is called rusting of iron. The two conditions. नेक्स्ट पॉइंट रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें आयरन के कुछ ऑब्जेक्ट बेचा जैसे आयरन नेल्स, आयरन पाइप्स, आयरन, ठीक है, इनको जब हम एयर के अंदर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं और इनको जो है गेट कवर्ड विथ ब्राउन पाउडर सब्सटेंसेस से, तो ये जो होते हैं ये ब्राउन पाउडर इनके ऊपर हल्का हल्का जम जाता है, जिसको कि हम सिंपल लैंग्वेज में कहीं तो जंग बोलते हैं, बेटा जंग लग जाता है, तो ये रस्ट कहलाता है और यह प्रोसेस जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है। Necessary for the rusting of iron are presence of oxygen of air, presence of water or water vapor. तो रस्टिंग की प्रोसेस होती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और वाटर वेपर की प्रेजेंस में होती है। Moisture. Rusting of iron is a chemical change because iron reacts with oxygen and moisture to form a new substance, that is, hydrated iron oxide, rust. And we cannot get back iron from rust. The process of rusting can be represented by the following chemical equation: iron plus oxygen plus water in moist air gives us hydrated iron oxide, rust, reddish brown, where X is equal to number of water molecules. Rusting damages iron objects. Rust is soft and porous. The layer of rust so formed falls off from the surface of a rusted iron object, exposing fresh iron metal, which starts rusting. This continued rusting makes the iron objects weak and ultimately makes them useless. तो रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट है। रस्टिंग जो होती है आयरन ऑब्जेक्ट को जो है डैमेज कर देती है। जब रस्टिंग हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के तो वो वीक हो जाते हैं वो ऑब्जेक्ट और कुछ दिनों के बाद जो है वो खराब हो जाते हैं। Iron is the cheapest and most easily available metal. Iron is extensively used in our day-to-day life in making large number of objects such as gates, railings, bridges, grills, and bodies of cars, buses, trucks, ships, etc. Rusting causes a great deal of loss and damage. Prevention of rusting: coating the iron surface with oil and grease.
नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग को रोकने के उपाय बेटा। तो सबसे पहले है कि हमें जो आयरन की सरफेस होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है आयरन को, उसके ऊपर पेंट या ग्रीस की जो है वो कोट कर देना चाहिए, उसे कोटिंग कर देनी चाहिए। Machine parts and tools made of iron are coated with a thin layer of grease or paint when not in use. It prevents them from coming in contact with air and moisture, and hence rusting is prevented. Coating irons with other metals, galvanization. The process of depositing a thin layer or coating of zinc or chromium metal on iron objects is called galvanization. नेक्स्ट है कोटिंग आयरन ऑफ अदर मेटल। कोटर के ऊपर हमें अदर जो मेटल्स होते हैं उनकी कोटिंग कर देनी चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर जो होती है वो जैसे जिंक मेटल हो गया, उनकी जो है आयरन के ऑब्जेक्ट उनके ऊपर थिन लेयर से हम कोटिंग कर देते हैं, यह गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। Iron sheets are dipped in molten zinc and then allowed to cool to make galvanized iron sheets. The thin layer of zinc metal protects it from rusting because zinc metal remains unaffected by air and moisture. The iron pipes used at our homes to carry water are also galvanized to prevent rusting. The iron sheets used for making buckets, drums, dustbins, and roof sheds are also galvanized to prevent them from rusting. By converting iron into stainless steel or alloying, molten iron is mixed with a fixed amount of carbon, manganese, chromium, and nickel. On cooling, it forms an alloy called stainless steel. Stainless steel does not rust at all in moist air. Cooking utensils, knives, scissors, and surgical instruments are made of stainless steel. Crystallization. Seawater contains salts dissolved in it, which make it salty. Salt can be obtained by the evaporation of seawater. This technique of separation is not good because the salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. Also, the shape of the crystals cannot be seen clearly. Crystals are the purest solid form of a substance with a definite geometrical shape. Many substances like sugar, urea, copper sulfate, alum, and table salt form crystals. Crystals of different substances have different shapes. Crystallization is the process of obtaining pure solid crystals having definite geometrical shape. It is a physical change. By obtaining crystals, we are able to purify certain substances. So students, let's start this lesson's questions answer. Very short question answer.